बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। जो वर्ल्ड बैंक के एक हायर रैंकिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि इफ़ द वॉर्स ऑफ दिस सेंचुरी वर फॉट ओवर ऑयल, द वॉर्स ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी विल बी फॉट ओवर वाटर्स। यानी इस सदी के अंदर अगर जंग लड़ी जाती है तो वो ऑयल पे लड़ी गई है, और अगर अगली सदी के अंदर जंग लड़ी जाएगी तो वो पानी पे लड़ी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है जो वाटर क्राइसिस का इशू है। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रो पॉलिटिक्स का है। हाइड्रो पॉलिटिक्स का टॉपिक जो है ये दरअसल इट्स ऑल अबाउट द वाटर इश्यूज। हाइड्रो पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रो पॉलिटिक्स वाटर इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान का विद इन द कंट्री जो इश्यूज हैं उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वाटर क्राइसिस की कॉजेस क्या है पाकिस्तान के अंदर, उस पर फिर हम अपनी रिकमेंडेशंस भी देंगे। फिर हम हाइड्रो पॉलिटिक्स को रीजन में डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की वाटर की डिप्लोमेसी क्या है, और फिर हम वाटर शेयरिंग जो है पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव भी देंगे, और एंड पे हम जो है वो कंक्लूजन देंगे। ये सवाल जो है ये अपनी नोयत के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ CSS। वाटर इश्यूज के ऊपर, हाइड्रो पॉलिटिक्स के ऊपर, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में भी सवाल एक्सपेक्टेड है, ऐसे भी एक्सपेक्टेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी जो है वो ये सवाल एक्सपेक्टेड है। स्टार्ट लेते हैं। जैसे मैंने आपको जो जो एक हाई एग्जीक्यूटिव्स थे इसके वर्ल्ड बैंक के, इस्माइल सेराजिल्डिन, उनकी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई कि मैंने कहा कि अगर वॉर्स जो है वो इस सदी के अंदर हुई हैं तो वो ऑयल पे हुई हैं, और अगर अगली सदी के अंदर वॉर्स होंगी तो वो पानी के ऊपर होंगी। पानी एक दुनिया का बहुत बड़ा इशू है, और इस स्टेटमेंट की वेरासिटी जो है वो इसका यानी इसका स्टैंडिंग पॉइंट बहुत कंफर्म्ड है कि आप अगर स्टेट ऑफ अफेयर्स चेक करें पाकिस्तान के और इंडिया के, दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, नेबर्स हैं, ठीक है, बट दे आर wrangling ओवर द वाटर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम फॉर द पास्ट 7 decades। वाटर इज, याद रखिएगा, वाटर इज स्ट्रेटेजिक नेचुरल रिसोर्स, and scarcity of potable water is a frequent contributor to political conflicts throughout the world. With decreasing availability and increasing demand of the water, some have predicted that clean water will become the next oil, making countries like Canada, Chile, Norway, Colombia, and Peru, with this resource in abundance, the water rich countries in the world। जिन कंट्रीज के मैंने आपको नाम बताए, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2003 के मुताबिक, फ्रॉम द वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम्स, इट इज इंडिकेटेड दैट in the next 20 years the quantity of water available to everyone is predicted to decrease by 30%। 2003 की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि अगले 20 साल के अंदर जो है वो इसकी जो यूटिलाइजेशन है, अवेलेबिलिटी है पर पर्सन, वो 30% डिक्रीज हो जाएगी, यानी 2023 तक जो है ये डिक्रीज हो जाएगी। करंटली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स इनहैबिटेंट्स हैव इनसफिशिएंट फ्रेश वाटर फॉर मिनिमल हाइजीन। अभी भी दुनिया के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जिनको कि बाकायदा हाइजीनिक वाटर नहीं मिलता पीने के लिए। More than 2.2 million people died in 2000 from disease related to the consumption of contaminated water or drought. In 2004, the UK charity Water Aid reported that a child dies every 15 seconds from easily preventable water-related disease. Often this means lack of sewage disposal. So this has become one of the biggest issue of the world. As far as we have identified that climate change is the biggest issue of the world, but with the climate change, water crisis is also the biggest issue of the world.
अब हम आते हैं हाइड्रो पॉलिटिक्स और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देखें तो हाइड्रो पॉलिटिक्स जो है ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा है किसी भी मुल्क की जियो पॉलिटिक्स के अंदर। किसी भी मुल्क की जियो पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा हाइड्रो पॉलिटिक्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा है। अच्छा, अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या फूड हो या एनर्जी हो, वाटर जो है वो उसके लिए एसेंशियल है। वाटर रिजर्व्स have started to reduce since the turn of the new century, and climate changes are making matters worse. According to the World Economic Forum रिस्क सर्वे, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिस्क सर्वे के मुताबिक only 60% of the global water requirements will be met by existing sources of 2030। यानी जो पानी मौजूद है इससे 2030 तक सिर्फ और सिर्फ 60% जो लोगों की जरूरियात हैं पानी की वो पूरी हो सकेंगी। एंड वाटर विल बिकम वन ऑफ द क्रिटिकल ड्राइवर्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। Assessing that the lack of cooperation could result in wars, obviously, वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव्स की जो स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताई कि अगली जो वॉर्स हैं वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन वाटर। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये दरअसल एक एग्रीमेंट है, एक ट्रीटी है between the Pakistan and India to use the water available in Indus system of rivers। यानी दरियाए सिंध के साथ एसोसिएटेड जितने दरिया हैं उनके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का जो अग्रीमेंट है उसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है is on record to have threatened to stop the flow of water of the rivers allotted to Pakistan under the Indus Water Treaty। According to this agreement, control over the water flowing in three eastern rivers of India, the Beas, the river, the Ravi and the Satluj, तीन दरियाओं के पानी का कंट्रोल जो है वो किसको दिया गया? अच्छा, और उसके बाद तीन दरियाओं के पानी का कंट्रोल जो है वो इंडिया को दिया गया, और जो पाकिस्तान को जिन दरियाओं के पानी का कंट्रोल दिया गया वेस्टर्न रिवर्स से, उसके अंदर द इंडस, the Chenab and the Jhelum was given to Pakistan and it was according to the Indus Water Treaty। और इंडिया कई दफ़ा इस चीज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे चुका है कि वो पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद कर देगा या वो सैलाब की सूरत में पाकिस्तान के अंदर पानी जो है वो छोड़ देगा। जो स्टिपुलेशंस थी इस इंडस वाटर ट्रीटी की have been criticized for many years, but with the water scarcity hitting the subcontinent, India has started encroaching upon the water resources by building new dams like Krishan Ganga Power Project that withholds the water flow of the river Neelam into the Pakistan, thus depriving Pakistan and giving India a means to control or even cut off water for Pakistan. So such kind of the conspiracy that is being done by the Indians. So Pakistan should revisit and reconsider the Indus Water Treaty because India has already violated the Indus Water Treaty. This is one of the major factors behind the hydropolitics between the Pakistan and the India. India has shown stubborn behavior and its defiance of international communities is highly regrettable and proves Indian enmity towards Pakistan। हर जगह पे हर लिहाज से अगर इंडो पाकिस्तान रिलेशंस का हम जायजा लें तो ये टेंस चले आ रहे हैं फ्रॉम द ब्रिटिश रूल 1947। मुख्तलिफ किस्म के कन्फ्लिक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर जो है वो होते रहे। One source of conflict between the two is over the Indus River, whose water they share। It flows through India and Pakistan to Arabian Sea। The disputes were settled in 1960 thanks to Indus Water Treaty, which allotted the water to Pakistan and India in the documentation। The scenario illustrates how water can be fundamental player in international geopolitics। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हाइड्रो जो इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोपॉलिटिक्स कहते हैं।
और जो ट्रांस बाउंड्री के बीच में जो प्रॉब्लम एक्सिस्ट कर रहा है, वाटर का एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है, can at any movement reduce, stop or pollute the flow of water to downstream country, where relations are bitter between the upstream countries and downstream countries. Upstream countries इंडिया आ गया, उसके अंदर जो है ठीक है, इंडिया इन आवर केस, एंड डाउनस्ट्रीम कंट्री पाकिस्तान आ गया। डाउनस्ट्रीम कंट्री को हमेशा नुकसान होता है उस सूरत के अंदर कि जब बारिशें बहुत ज्यादा हो, पानी वाफिर हो, तो पानी छोड़ दिया जाता है, जैसे कि डाउनस्ट्रीम कंट्रीज जो है वहाँ फ्लड आने का नुकसान होता है और उसकी इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होती है। India and Pakistan are the nuclear powers with the strained relations, especially over the disputed land Kashmir. The headwaters of the Indus water are located in Kashmir, and as explained above, upstream countries have a huge advantage over downstream countries, as Pakistan is the downstream country and India is the upstream country. Fortunately, the Indus Water Treaty has prevented open military conflict. Simple. Jabke treaty is once again threatened by Indian plans to build hydroelectric dams in this area. The Indus River provides water to over 80% of Pakistanis, 54 million acres of irrigated land, and farming activities provide 21% of the country's GDP. ये इकोनॉमिस्ट 2011 की रिपोर्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इंडस वाटर जो है, इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान के 80% लोगों को जो है वो पानी मुहैया करता है। 54 मिलियन एकड़ जो जमीन है वो उससे काश्त होती है, और फार्मिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड, और यही फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो जीडीपी के 21% के अंदर 21% जीडीपी का जो है वो फार्मिंग से आता है। पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन रीजन है कि इंडिया नीड्स टू पावर इट्स इकोनॉमी and is investing serious amount of money in hydroelectric dams, or at least 30 already exist on the border, and some have already been the subject of international dispute in the early 2000s. India built the Baghlehar Dam on the Chenab River after a neutral expert ruled in its favor. A court of arbitration stopped India from constructing a permanent structure for the Krishan Ganga Dam, and the latest case under dispute is the construction of controversial Nimu Basgo hydropower project on the Indus River. This is one of the major problem, one of the major issue for the Pakistan, and that is और फ्यूचर के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये एक नई रंग जो है वो लेगा, ठीक है। और सिचुएशन इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसके अंदर आप जो अगर हम देखें कि सिचुएशन इज अलार्मिंग एंड टेंसिंग, is building up. Ironically, India faces the same problems as downstream countries over the Brahmaputra River with its neighboring country in the Far East, China. अब चाइना के वो डाउनस्ट्रीम आ जाता है, as proven by the success. इंडिया चाइना के डाउनस्ट्रीम आ जाता है, पाकिस्तान इंडिया के डाउनस्ट्रीम आ जाता है, as proven by the success of the Indus Treaty. Selfishness is not the answer for the vital resource such as water. Cooperation and compromise have been working well in the area. However, as an important growing economies such as India and China seek further sources of electrical power, international efforts should immediately give more attention to these hydropolitical events in the region and urge transboundary countries to seek agreement with the clear framework such as the Indus Treaty. Otherwise, water wars are much more of a possibility than we can really imagine. So this is the time that India and Pakistan should think over it, that if they are going to expand or extend the wars, तो वो पानी के इशू के ऊपर जो है वो इशू को बढ़ाएं, एक दूसरे के पानी के ऊपर, जैसे इंडिया पाकिस्तान के पानी के ऊपर डाका डालता है वो डालता रहे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे और पाकिस्तान के और इंडिया के हालात मजीद खराब होंगे। दोनों गरीब ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से दोनों के अंदर दरमियान जंग हो सकती है, और जंग की सूरत में जो है वो दोनों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। लिहाजा दोनों कंट्रीज को जो है वो सोचना चाहिए कि पानी की जो डिविजन है, पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको वो किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज